Hello, good morning, students. Today's topics are potential energy, then types of potential energy, followed by law of conservation of mechanical energy. So, first of all, what is potential energy? It is the energy possessed by body by virtue of its position in a field of force or by its configuration. Examples of bodies possessing potential energy due to position are: number one, water stored in a reservoir. If water is allowed to fall from a height, say it is allowed to fall from this position, the water falling down can be used to rotate turbine. So when this water rotates turbine, then work is done by the water. Now greater is the height at which water is stored, greater will be the work done by water. So if water is at the ground level, stored at the ground level, it cannot perform work. So इसके पास कोई energy नहीं है. When we say that body has energy, if it is in a position to do work. So जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे पानी को स्टोर करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके पास एनर्जी होगी. So this energy is because of specific position of water above the surface of earth. More height, more potential energy. So we can say it depends on position of this reservoir कि इसके पास कितनी potential energy होगी जो पानी है इसमें. So another example, when a weight is lifted, तो जितना ज़्यादा ऊंचाई पे इसको लेके जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसके पास एनर्जी होगी. Now some of the examples of potential energy due to change in configuration. You know, stressed bow. The stressed bow can be used to propel arrows. This is bow, BOW. तो अगर if it is in this position, it cannot be used to propel arrow. But if it is stressed like this is arrow. So when release, this arrow will move forward. So this is string of bow, dhanush. This is arrow. So stress bow can be used to propel, stress bow, BOW, can be used to propel arrow with high speed. So in this configuration, this bow does not have potential energy, but when it is stressed, its configuration is changed. पहले ये ऐसे थी तार, अब अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, नाउ इट इज कैपेबल ऑफ प्रोपेलिंग दिस एरो. सो व्हेन एरो इज प्रोपेल्ड, वर्क इज डन. सो वी कैन से इसके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी. तो स्ट्रेस बो कैन प्रोपेल दिस, stress bow can propel arrow, so it has energy. So this energy, which is because of change in configuration of this bow, is called
potential energy. Similarly, catapult you might have seen. Catapult is also used to propel stones, pebbles. So it is a bi-shaped frame of wood और प्लास्टिक, और यहाँ पे एक बेल्ट लगी होती है, और इस बेल्ट में हम यहाँ पे कोई स्टोन या पेबल पकड़ लेंगे. व्हेन दिस बेल्ट इज स्ट्रेच, ये स्टोन जो है बहुत तेज स्पीड से आगे की तरफ जा सकता है. तो वी कैन से दिस स्ट्रेच कैटापुल्ट also has energy. This is called elastic potential energy. तो ये पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? व्हेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज और व्हेन दिस बेल्ट इज स्ट्रेच. अगर ये अपनी नॉर्मल लेंथ में है बेल्ट, इट विल नॉट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन नॉट propel stone. But if it is stretched, means if its configuration is changed, it will have energy, potential energy, and because of that energy this stone can be propelled. There are so many other examples. Compressed spring or stretch spring, उसके पास भी potential energy होगी. We will study here. Compressed gas, then stretch catapult. These are the examples of potential energy. Potential energy is of three types: gravitational potential energy, second is elastic potential energy, and next one is electrostatic potential energy. तो सबसे पहले gravitational potential energy of a body near the surface of Earth. This is a body of mass m lying on the surface of Earth. This is Earth. Its mass is m. So according to Newton's law, force will act on this body toward the center of Earth, and this force is called weight of this body. So mg is the force acting on this body which is lying on the surface of Earth. Now in order to lift this body from say position A to position B, we need to apply force. How much? If this is 20 Newton force acting on the body in downward direction, we need to apply 20 Newton force to lift this body. So we can say force required to lift this body is equal to mg. This F is फोर्स जो हमने लगाई इस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए. दिस इज द फोर्स जो अर्थ लगा रही. इफ अर्थ इज अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स ऑन दिस बॉडी, वी विल हैव टू अप्लाई 20 न्यूटन ऑफ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन टू लिफ्ट दिस बॉडी. So this is the force required to lift body equal to mg in magnitude. Work done by us. This is the force which is applied by us. This is displacement, and this is the angle between F vector and H vector. Force ऊपर की तरफ. This is initial position of body. This is final position of body. तो displacement की direction ये होगी ऊपर की तरफ. This. So both are in same direction. We can say ये this is the direction of force, this is direction of displacement h. So both are in same direction. So theta is 0. W is equal to fh, and put the value of f, it is mg. So this is the work done in lifting body from A to B. This work is done against gravitational force. I repeat, work is done by us against this gravitational force. So this work which is done by us against gravity is stored in the form of gravitational potential energy. तो यहाँ पे इस पोजीशन पे इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय अस. So gravitational potential energy is equal to work done. So work done is mgh. So substitute value of W. So
gravitational potential energy is mgh. M and g, they are constant, so gravitational potential energy is directly proportional to h. So h अगर बढ़ेगा तो potential energy भी बढ़ेगी. So this is the graph showing variation of gravitational potential energy with height. जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. Now next one is law of conservation of mechanical energy. Mechanical energy, as I told you earlier, it is sum of potential energy and kinetic energy. It states that mechanical energy of a freely falling body is conserved if apple falls down, then at this point it has gravitational potential energy. This is surface of earth. So when it falls, इसका acceleration it will be equal to 9.8 meter per second square. When force acts, acceleration is produced. और जब अर्थ फोर्स लगाती है, इट इज़ फॉलिंग बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय अर्थ. तो जब अर्थ फोर्स लगाती है तो एक्सेलरेशन इतना होता है. वी कॉल इट, वी डिनोटेड बाय जी. So it is called free fall. So consider a body of mass m falling freely under gravity. So ये h ऊंचाई पे थी बॉडी. दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ विच इज रेफरेंस लेवल. दिस बॉडी ऑफ मास m इज अलाउड टू फॉल फ्रीली. तो अर्थ की फोर्स के कारण ये नीचे चलेगी. यहाँ पे सपोज ये हमने पकड़ रखी थी, ये हमारे हाथ में थी बॉडी. सपोज इट इज़ ए बॉल और ब्लॉक. अभी इट इज़ इन आवर हैंड. सो एट पॉइंट ए it will have gravitational potential energy but not kinetic energy because ये अभी हमारे हाथ में है. it is not in motion. So at point A, mechanical energy at A denote mechanical energy at A is equal to sum of potential energy, gravitational potential energy at A plus kinetic energy at A. Kinetic energy at A is 0 and gravitational potential energy at A is mgh because h is its height above the surface of earth. So this is mechanical energy of body at A. Now when it is allowed to fall, acceleration is equal to 9.8 meter per second square. So चलिए जब हमने छोड़ा थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ से गिर के यहाँ पहुँच गई बी पॉइंट पे, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट x हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई. और इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएगी इट विल गेन वेलोसिटी एंड लेट अस सपोज एट b इट्स वेलोसिटी इज vv. So here it will have both types of energy, kinetic as well as potential. Now its height above the surface of earth is h minus x रह गई. पहले h थी, now it is h minus x. So gravitational potential energy at b, it is mg and height h minus x. vv is the velocity, so kinetic energy at b is half m vv square by 2. Now we know this formula. You apply this formula from a to b. a to b means a पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल लेंगे हम, और b पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल, और ये डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की a से b तक. सो फ्रॉम a टू b मीन्स a पे वेलोसिटी इनिशियल, b पे फाइनल. तो इन b पे वेलोसिटी इट इज़ vv. सो vv माइनस a पे velocity initial 0 is equal to 2 because it is falling freely, so a is equal to g and displacement is x. So I am sorry, it should be x. So from here vv square is 2gx. तो इसकी वैल्यू जो है आप vv की यहाँ पे पुट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. So kinetic energy at b is half m, it is bv square की वैल्यू. ये कट गया 2,
This is the kinetic energy at B. Kinetic energy at B ये है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी ये रही mgh-x। इन दोनों को ऐड कीजिए और ये आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इतनी है प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी ये निकाली हमने। इसमें व्हेन यू विल ओपन इट विल बी mgh माइनस mgx और ये प्लस mgx है, ये कट जाएंगे। So it is EB is equal to mgh. Now then at C, just before hitting the ground, अभी ये ग्राउंड को इसने हिट नहीं किया है, let us suppose इसकी स्पीड vc है C पॉइंट। When it will touch ground, its speed will become 0. But I am talking of just before hitting the ground, its speed is vc. So kinetic energy will be half mvc square. And potential energy, gravitational potential energy will be 0 because height above the surface of earth is 0. So at C, potential energy is 0, kinetic energy mvc square by 2. Now again we know this. Now apply this from A to C, not from B to C. यहाँ से यहाँ नहीं लगाना है. We will again initially I applied it from A to B. Now I will apply it from A to C. यहाँ पे velocity initial और यहाँ पे जो velocity of final और ये displacement. So final velocity is vc, initial velocity 0 to acceleration is g and displacement A से C तक it is h. It gives you vc square. vc square की वैल्यू यहाँ डालिए तो kinetic energy at C ये आ गई हमारी, it is mgh. So mechanical energy at C it can be obtained by adding potential energy at C and kinetic energy at C. So potential energy at C is 0. This is value of kinetic energy. So EC is equal to mgh. So if you look carefully at equation number 1, 3 and 4. Equation number 1, A पे mechanical energy mgh, B पे mechanical energy again mgh, C पे mechanical energy again mgh. So from 1, 3 and 4 equation, EA is equal to EB is equal to EC is equal to mgh. Thus mechanical energy is conserved. जितनी एनर्जी ए पे थी इसकी मैकेनिकल उतनी ही बी पे है, उतनी ही सी पे है. सो व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस? जस्ट यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग जब बॉडी ए से नीचे आ रही है. काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक बॉडी आएगी जो डिक्रीज होगी उतनी ही इसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी. सो दैट्स व्हाई इट विल रिमेन इक्वल. यू कैन से यहाँ पे टोटल एनर्जी है 100 जूल और इस टोटल में पोटेंशियल एनर्जी इज 100, काइनेटिक एनर्जी इज 0. तो यहाँ से यहाँ आई बॉडी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 कम होगी यहाँ से यहाँ तक. सो ये रहेगी हमारी 80, 20 घट गई पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल फिर से 100. जब यहाँ आएगी तो ये 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, ये 0 हो जाएगी और काइनेटिक बढ़ के 0 से 100 एंड अगेन इट इज़ 100 जूल. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. Now these are graphs. A पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही B पे उतनी ही C पे. सो वी कैन से चाहे हम बात करें यहाँ पे, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी 100, ऊपर जाएंगे H बढ़ेगा, यहाँ पे फिर मैकेनिकल एनर्जी 100, यहाँ जाएंगे 100 100 100 100. सो H बढ़ता जाएगा बट मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन सेम. सो दिस इज द ग्राफ. नाउ पोटेंशियल एनर्जी एज वी प्लॉटेड on the previous section K mgh is gravitational potential energy. If h increases it also increases. So ये है increase in potential energy, gravitational potential energy you may write. Now
जैसे जैसे h बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगी. सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद height. Now next we have transformation of energy in simple pendulum. It is simple pendulum. This position is mean position. It is a thread, flexible thread, and this is rigid support from which it is suspended. When this bob is taken to extreme position E2, its height increases. इनिशियली ये इस लेवल पे था, दिस इज द रेफरेंस लेवल, और अब इसकी ऊंचाई बढ़ गई, रेफरेंस लेवल. सो हाइट बढ़ गई तो इसका मतलब इट गेन्ड GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम इसको O से E2 पोजीशन पे लेके गए. सो हियर इट हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर आप इसको हाथ में पकड़ के रखते हो तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज 0. सो एट E2 gravitational potential energy is mgh, kinetic energy is 0. when this bob is released, ये इधर आएगा. जैसे जैसे इधर आएगा इसकी हाइट कम होने लगेगी above reference level. So gravitational potential energy will decrease from E2 to O. And decrease in gravitational potential energy will appear in the form of increase in kinetic energy. So we can say gain in kinetic energy from E2 position to O is at the expense of gravitational potential energy, which is reduced. But the sum of two types of energies will remain constant at any point between E2 and O. If here gravitational potential energy या mechanical energy is 100, यहाँ पे total energy will be in potential energy form, there will be no kinetic energy. यहाँ पे mechanical energy, it will be partly in kinetic form and partly in potential energy form. But here again gravitational potential energy will be 0 and total energy will be in kinetic form. So this is transformation of energy in simple pendulum. At extreme position energy is totally potential, and when it moves from E2 to O, its potential energy decreases, and decrease in potential energy appears in the form of increase in kinetic energy, and total mechanical energy remains constant at any point between E2 and O. That's all in this lecture. Thank you for watching.